सुस्वागतम सुस्वागतम लक्ष्मी लीला ग्रुप GSC 45 प्लस T20 लीग 2025 के 24वें मैच की शुरुआत अगले कुछ ही क्षणों में होगी। टॉस होने जा रहा है टीम राइडर्स बनाम टीम एस चार्जर्स। दोनों ही कप्तानों से निवेदन करता हूं कि टॉस के लिए तुरंत ही मौजूद रहे। हमारे टॉस के बॉस सुब्रमण्यम वेंकट, मेरे राइट साइड पर है टीम एस चार्जर्स के कप्तान गौरंग कराका से, और मेरी बाई तरफ है सुनील रहेजा, टीम राइडर्स के कैप्टन और कोनर। हु विल टेक द कॉल? गौरंग टू टेक द कॉल. Tails is the call and it lands tails. Gaurang, you guys are at the number 8 position, match number 5 getting started. Not such a good position. It's a do or die match and you have to win this one to maybe stay alive in this tournament. A very important game. It's a very important game for us today. And having winning won the toss, I think we'll restrict just in a very minimal score of maybe 20 to 130 because they have got a good batting strength and we have got a good decent bowling lineup. So hopefully it works and we restrict them at the minimum. Team Riders is going to be batting first at the number 5 position. 5 matches, 2 wins, 3 losses. Important game. You win this one, you stay in contention to get to the third, fourth, or the second position. What a must-win game. It is very important to stay in the fray. We have to be in the top 4. That's what we are aiming at right now, and we're taking each game at a time. Slowly, we have to play one game at a time. Very good side, so let's see whatever maximum we can score. What is the best? I don't know because it's very easily chasing on as the two comes to pitcher. But let's hope that can we make some good program. Yes, two positive captains out here. It's time for both the teams to align together for that team snap. Ace Chargers playing match number 5. If they want to be there in the top 4, this is a must-win game, and so are the other games as well. So last and final chance for Team Ace Chargers to up their ante and make their presence felt at the GSC 45 Plus League. At the number 5 position is Team Riders. The most important game for Team Riders, as if they win this one, maybe they can think of ending up in the first 4. They lose this match, they're going to be at the number 6 or the number 7 position, and from there on to get amongst the top 4, it's going to be very difficult. So yes, this should be quite an exciting game. After team kneels down for both the squad. गणपति बाप्पा, चलिए राष्ट्रगान के लिए सावधान पोजीशन में खड़े होंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं खुद पे विश्वास करो. Good evening. We are a little behind schedule. Just have a look at the clock. It's already 3 minutes past 7. The umpires have taken their positions. Match number 24 of the Lakshmi Leela Group GSC 45 plus T20 League Season 7 getting underway. Gaurang has won the toss, that is Team Ace Chargers, and is decided to insert the opposition in. Team Radis is going to be batting first, and Sunil Roheja
mentioned that they would be wanting to put up a decent score, something in the region of 150. On the other hand, Gaurang mentioned that ideally he would be wanting to wind up the proceedings for Team Riders in less than 130 runs. Team Riders is at the number 5th position, not here nor there. So quite an important game. This is the night wherein it will be decided whether Riders remain in the first half or they get into the second half. Ajay Prabhudesai and Kishore Pandey, the opening pair for Team Riders. I'm sure that both the teams have got their game plan A and game plan B in place. It's all about going out there and executing your game plans to perfection. Drawing up your game plan and executing it is a totally different thing. Warm welcome to Kuldeep sir. It's going to be Amit Desai to be bowling from the in-orbit end. Can we have the countdown? Game on. Amit Desai has been one of the key performers for Team Ace Chargers. He's collected a Man of the Match award as well. So he's definitely one of the key links in the lineup of Team Ace Chargers. And tonight, in this very important game, the key players have to up the ante. They got to make their presence felt in this big match. It's time for the key players to make a big statement. And the whole team, each and everybody has to kind of chip in. They have to play like a cohesive unit. It's not about one or two individual players. It's all about being in sync as a team. Especially when there is that rule of the batsman retiring after playing 36 balls. The team effort is more important. Play time. The first runs on the board, Ajay Prabhudesai off the mark. Ajay has been promoted up the order and this is the golden opportunity for him. So is a good chance for Kishore Pandey to establish himself as one of the better all-rounders at the tournament.
The fielding will have to be spot on. In fact, the body language at the start of the match from the fielders has to be the big body language. You got to convey a message to the opponents. The warmers of warm welcome to our cricket committee chairman Kaushik Bhai Mehta, one of our key organizing committee members. Well bowled, Amit Mehrotra. We have with us the co-convener, the senior man, that's Subbu Bhai. This time a change in line, and that was quite obvious. The ball drifting into the middle, and next time we'll have to wait and watch. Just home in the nick of time. That's the danger when you come out to bat with the runner. The good thing about Kishore Pandey's attitude and approach this season as a batsman is that he's put a price on his wicket. He's not looking to play that cameo. He's looking to play as a proper opening batsman. A little bit of hesitation between KP and the runner for Ajay Prabhudesai. So that has to be sorted out in quick time. The score at the end of the first PCPL over, that's 5 for none. The runner is Himal. As always, Kuldeep Paji has got the best seat in the ground. Everybody will be coming and sitting around Kuldeep sir. Kaushik Bhai has arrived quite early, and I'm sure that he's looking to execute some of his plans out here. This is match number 24. 47 matches to come in this tournament. Pragnesh it is to be bowling from the in-orbit end. Most of the new ball bowlers in this tournament have been very slowish through the air and off the wicket as well. Military line and length, just looking to bowl slow and put the ball in the right areas. Warm welcome to Parminder Singh Mamra. All ball and no plate. That is where you want the ball to be landing at most times with that kind of pace and wicket to wicket bowling. That's going to be a challenge for any batsman. Too wide. Looking a little stiff out there, KP. And that is why you have to go through that proper warm-up, and after the match, the proper cool-down process. It's all about sticking to the process. Focus on the controllables. Do not even give a thought to the uncontrollables. That's played with an intent. That was outside the off stump and dragging the ball into that wideish mid-wicket area. Sunil Bhutoria in that area. He's been advised not to throw. He's going through a shoulder recovery. So Sunil Bhutoria has to be a little careful. The wound is still fresh. Not a bad start by Pragnesh.
It's all about sticking to your role. It's got the confidence of the think tank. DJ has given it a chase. So has Jagdish. Jagdish Bisawa, two senior players who always give more than 100% in the field. DJ and Bisawa. $11 runs on the board. They get to the double-digit mark. What was the appeal for? Excitement in the air, tension in the air, because this is a very important game. Score at the end of 2 PCPL overs, that's 12 for none. कुलदीप सर, जिस स्थिति में है टीम एस चार्जर्स, इस मैच को किसी भी हाल में जीतना है. इस मैच को जीते तो एक आशा की किरण अभी भी जागरूक रहेगी. अगर इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा होगा. बिल्कुल आपातकालीन स्थिति बन जाएगी टीम एस चार्जर्स के लिए. तो ये वाला मैच जीतना जरूरी है. डू और डाई सिचुएशन. राइडर्स के लिए भी मसला ये है कि इस मैच को जीतते हैं तो टॉप हाफ में बने रहते, मैच को हारते तो बॉटम हाफ में आएंगे. काफी क्रिकेट अभी भी खेलना शेष है इस जीएससी 45 प्लस लीग में. 24वां मैच है, 47 मैचेस खेलने हैं. बहुत ही लंबे सीजन को बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम देते हुए कौशिक मेहता. धनंजय पांचाल की आजमाइश काफी जल्द हुई है. दो बहुत ही अच्छे स्पेल्स को अंजाम दिया है इस टूर्नामेंट में डीजे ने. यह गेंद बहुत ही सटीक है. धीमी रफ्तार से बिल्कुल लेंथ एरिया आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हल्की सी. अजय प्रभु देसाई को भी एक बड़ा मौका मिला है कि अपनी बल्लेबाजी के दम पर एक अच्छा प्रदर्शन करे, एक अच्छा योगदान करे. इस महत्वपूर्ण मैच में इतनी अहम जिम्मेवारी अजय प्रभु देसाई के कंधों पर सौंपी है. तो जो नेट्स में मेहनत की है, प्रैक्टिस सेशंस में जो इंटेंट दर्शाया है, उसके बलबूते पे विश्वास जताया है. बढ़िया शॉट. चलिए, कोई भागने की आवश्यकता है ही नहीं. उस शॉट पर रिदम मोबाइल्स चौका बड़े पैमाने पे लिखा हुआ था. वो गेंद बिल्कुल आपने पड़ोसी केपी के बिल्कुल रेंज में और उठा पटक दिया रिदम मोबाइल्स चौके के लिए. आज की शाम का ये पहला चौका वो निकलता हुआ केपी के बल्ले से थोड़ा सा एक अलग आत्मविश्वास दे जाएगा. वो शॉट केपी को क्रॉस पैड से खेला था, थोड़ा सा हवा में खेला था. डीजे को भी डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं है इस तरह के शॉट से. मिड विकेट में नारायण शर्मा. अभी भी वो जमकर खेला नहीं इस टूर्नामेंट में नारायण शर्मा ने. हालांकि काबिलियत तो बहुत ही ज्यादा है, सक्षमता काफी है नारायण शर्मा में. गौरव यादव और वी सरवैया टीम एस चार्जर्स की वो ओनरशिप पेयर बहुत ही पॉजिटिव एम्बियंस देने में सफल हुए हैं. वी सरवैया और गौरव यादव टीम एस चार्जर्स को
टीम चार्जर्स ने डेब्यू किया था जीएससी ओपन लीग में और डेब्यू पे ही वो चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने कब्जे में लेने में कामयाब हुए, तो वो कॉन्फिडेंस उनके साथ है। अच्छा प्रदर्शन करना है, इस मैच को जीतना है, वो टूर्नामेंट में जीवित रहना जरूरी है। राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट में विशेष रूप में जो इतने लंबे अरसे तक जो टूर्नामेंट चलने वाला है, उस टूर्नामेंट में आपको बीते हुए मैचेस के रिजल्ट्स को बहुत ही जल्द भूलकर करंट मैचेस और आने वाले मैचेस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। छोर बदले है, गेंदबाज वही है। हमारे टाइटल स्पॉन्सर लक्ष्मी लीला ग्रुप, प्रवीण कोठारी वेंचर, को स्पॉन्सर्स जेंसन एलईडी लाइट्स, गंदारॉल रिफाइनरी, रिदम मोबाइल्स, कंफर्ट ग्रुप, पीसीपीएल, man with immense potential, Amit Desai, immense potential, let me tell you that. He will always be a value addition for the teams that he represents. Great value addition, no doubt about it. And because he is such a good player, that extra responsibility is on his shoulders tonight. He's got to get along that X factor going into his game tonight. Gaurang Karakasia, as always, spot on with his wicket keeping. Just look at the cricketing acumen that is with Gaurang Karakasia. Great cricketing brain. That's a good looking cover drive and equally well fielded, equally well fielded. You cannot keep him out of the game. That's Sunil Bhutoria. Receiving 2 runs for the team. If that had to go past Sunil, was with the mobile's boundary. So well done. इसी जज्बे को दर्शाना जरूरी है. इस तरह की एफर्ट पूरे टीम की फील्डिंग स्टैंडर्ड को अप करेगा. बहुत ही अच्छी चैनल पकड़ी है देसाई ने. बिल्कुल मिलिट्री लाइन एंड लेंथ, मेट्रोनॉमिक गेंदबाजी, और इसी तरह की गेंदबाजी को पेश करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है नई गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए. तो दोस्तों 4 पीसीपीएल ओवर्स की समाप्ति के बाद 23 रन्स बने हैं बिना कोई नुकसान के. एक शांत शुरुआत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी विकेट अभी भी महफूज है. तो एक सोची समझी रणनीति के तहत इस इनिंग्स का आगाज किया है अजय प्रभु देसाई और किशोर पांडे ने. प्रज्ञेश शाह गेंदबाजी करेंगे इन्फिनिटी की तरफ से. हमारे 2 अंपायर्स, ऑनफील्ड अंपायर्स राजू पवार सर और प्रशांत दुबे सर.
अच्छा सीजन रहा है दोनों के लिए, उनके लिए भी वो फॉर्म जरूरी है और कहना होगा कि अच्छे फॉर्म में दोनों ही हमारे ऑनफील्ड अंपायर्स। और हमारे थर्ड अंपायर अजीत चौहान सर हमेशा सतर्क, हमेशा अच्छी एनर्जी दर्शाते हैं हमारे अंपायरिंग पैनल। हमारे गवर्निंग काउंसिल मेंबर और हमारे वरिष्ठ सदस्य सतीश अग्रवाल सर का स्वागत है। और एक जीसी मेंबर जितेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद है, उनका भी स्वागत है। क्या क्रिकेट पेश करते हुए जितेंद्र गुप्ता, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर, केवल दिशा दी, किसी भी तरह से जोर से मारने का प्रयास न किया, इस बात की खबरदारी ली कि गैप में मैं मेरे शॉट को टाइम करूंगा। फलस्वरूप रिदम मोबाइल्स चौका, अपने दायरे में रहकर किस तरीके से अपनी गेम को सजाना है और टीम को लगातार योगदान देना है, वो सीख लेनी है तो फिर जितेंद्र गुप्ता से लेनी होगी वो सीख। द कंसिस्टेंसी, द रिलायबिलिटी दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, दैट्स ऑसम, and that is not coming easily. The players are working hard day in and day out. That's well played and well run. Players like Jitendra Gupta are very strong in the head. They know what they are doing out there when they are in the middle. They know what they are supposed to do. Oh, there was maybe an inside nick in it. To be pouching that catch would have wanted a superhuman effort. They have a specific target in mind. At the time of the toss, Sunil Roheja mentioned that something in the region of 150 is what they are targeting. A meaningful start. Yes, a meaningful start. Not bad. Decent start. This is exactly what you want to be doing, fending off the good deliveries with soft hands and collecting the singles. The singles that KP is collecting here, that will frustrate the bowler. That is exactly what I meant. Those good deliveries are being taken for singles, and that was a little frustrating, and he sprays outside the off stump for a wide run. 31 for none. That's sounding better. 31 for none. A good start. Looking for that early breakthrough. That's a team ace charges. थोड़ा से हवा में खेला है, चित्रांगन ने मिस कर दिया। अच्छी तरह से जज किया था, अच्छी पोजीशन बना ली थी। कैच छूटा, दिल रूठा, सपना टूटा। बहुत ही जल्द ऐसा कहने में, एफर्ट भी देखिए, अच्छी पोजीशन बना ली थी, एंटीसिपेट अच्छा कर लिया था। अच्छी एंटीसिपेशन के बाद, अच्छी पोजीशन बनने के बाद वो कैच लेने का है। और जिस पोजीशन में चित्रांग फील्डिंग कर रहे हैं, वहां पर वो एंटीसिपेशन बहुत ही मायने रखता है। एक मौका हाथ से निकला। गौरांग कलाकासिया बहुत ही शातिर दिमाग के धनी है और अपनी गेंदबाजों को बिल्कुल सटीक तरीके से रिवॉल्व करेंगे, सही फील्डर्स को सही जगह पर तैनात करेंगे।
इतना कुछ अपनी क्रिकेट करियर में अचीव करने के बाद भी गौरांग अभी भी क्रिकेट का एक अच्छा विद्यार्थी है. बहुत ही बढ़िया समा बंधा हुआ है काफी जल्द इस मैच में. टीम एस चार्जर्स आज हमारी लेफ्ट साइड पे है, ज्यादातर राइट साइड पे होती है. मेरे ख्याल में इस पूरे सीजन में केवल दूसरी बार लेफ्ट साइड का कैंप मिला है इस चार्जर्स को. चौंतीस रन बने हैं. अमित देसाई का ये तीसरा ओवर. वो किया है मिड विकेट की दिशा में, वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं. स्वागत है रिदम मोबाइल से चौका, थोड़ा सा अंदरूनी किनारा था और इस वजह से थोड़े से नाराज हुए अमित देसाई. जो फील्डिंग सजाई है उससे लिया से वो लाइन ने थोड़ी सी आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर रखना जरूरी होगा. अंडरआर्म थ्रो और अंडरआर्म थ्रो ही करना चाहिए सुनील ने. चार रन से मिलेंगे वो जैसे ही वो गेंद मनु शर्मा की बगल से निकली उस पर रिदम मोबाइल से चौका लिखा हुआ था. किशोर पांडे जिस भूमिका को अदा करने के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा है उस पूरी तरह से चुनौती पर खरे उतरते हुए 6 पीसीपीएल ओवर्स की समाप्ति के बाद 43 रन बने हैं. थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ने की फिराक में नजर आती हुई अब टीम राइडर्स. फाउंडेशन अच्छा है, साझेदारी अच्छी है, किसी भी वक्त अब गियर से चेंज करने का वो फरमान आ सकता है थिंक टैंक की तरफ से. स्वागत है पराग शाह का. जीएससी क्रिकेट का एक सितारा जुगराज मेहता आया हुआ है, स्वागत है. वेर आर यू जुगराज, वेर आर यू लॉस्ट. मुंबई में 23 का लेबल लगा है, वो मुंबई कैप जल्द से जल्द मिले ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं. आर्यन पत्नी, जुगराज, वेदांत गाडिया, यश गाडिया, the two players who played for the Mumbai under-23 squad this season, Aryan and Jugi. Brought into the attack is Jagdish Bisawa. What an asset Jagdish Bisawa is turning out to be for team Ace Chargers. The last season was a good one, and this season is looking to establish himself as one of the better left-arm spinners at the GSC senior cricket, and he's going about things very methodically. That's the thing about Jagdish. He sticks to the process, he works hard on the game, and he knows his limitations. So that's Jagdish Bisawa. If Jagdish Bisawa can turn round the corner, so can some other good players. You need to turn round the corner. You need to take your game from large to extra large. I just wonder why Narayan Sharma has gone cold as a batsman. We were expecting so many good things from Narayan. He can explode anytime.
Just a look at what Anand Sangai has done. Srinath Pai, Sam. That innings from Prashant Desai, yesterday's knock, super knock. Oh, that is the perfect delivery to start with, not a bad delivery as you open your spell. When the ball comes from above the eye level of the batsman, that is where you put him into a spot. You put the batsman into 6s and 7s. Beating the batsman in the flight is one of his stronger points, and he needs to stick to that. This time the flatter trajectory. Gaurang must have felt that there was some kind of bat in it, otherwise he would not have appealed. The noise would have come from somewhere. $44 for none. एक ही रन था उस शॉट में. Warm greetings to our GSC 45 Plus tournament convener, that's Prasad Karkera. Welcome to him. The deputy to Kaushik Mehta, the cricket committee chairman and the governing council member. It's been a good vigil for KP, but I'm sure that he will be looking to shift gears. The key thing for KP is not to lose the steam. That power has to be packed in the shots. The punch has to come along. A score after 7 overs, 48 for none. Chitrang Thakkar has been brought into the attack from the
infinity end. Sorry, in orbit end. 48 for 1 after 7. Oh, what a start! What a start! Starting from where he left the other night. Just look at the way he picked up the length of that delivery so early, getting into a good position and smacking it away for Rhythm Mobile's boundary. There was so much of rhythm going into that shot for Shailesh. Extraordinary. As if he's playing on 30 not out. That kind of a shot. 50 up on the board. That's Pragnesh in the backward square leg area. Chitranga has turned a spinner from a pace bowler and have a feeling that he should have done that quite early, maybe 2 years back. He's looking good as a spinner. Chitrang is very passionate about the game, especially his bowling. So he puts in the hard yards. He brings lots of positivity to his charges. When you're bowling from the corner of the crease with those balls being angled in, difficult for the umpire to raise the finger to convince the umpire, difficult. That was the loose delivery and that has been put away for Rhythm Mobile's boundary. That was begging to be hit away and the batsman obliges. You got to make sure that you do not dish out those kind of deliveries. No room for error. One ball left in over number 8. That's 58 for 1. What a start for Shailesh. He will be looking to emulate what is done in the last match, the last innings. Terrific knock of 60 of 35 balls. And if we can really come up with something similar, Sunil Raheja will be a happy man. The ownership camp of team riders, that's Sunil Raheja, Vishal Todi and Jayesh Jogia. It's a no ball. So bonus time. It's a free hit. So obviously Shailesh Chadha will go after it. Premeditated.
The batsman and the wicketkeeper both missed the line. A couple added. That couple takes the score to 61. One ball left. The 8th PCPL over. There was always a run in it. The score after 8 PCPL overs 62 for 1. के गेंदबाजी बैटरी के एक हुक्मी इक्के को अब गेंदबाजी करने के लिए उतारा है. ड्रिंक्स इंटरवल के पहले 9वें ओवर को लेकर गेंदबाजी का आगाज करेंगे राजीव. 62 रन से 1 विकेट के नुकसान पर. शैलेश अगर 15-20 मिनट अगर विकेट पे रुक जाएंगे तो राइडर्स की इनिंग्स में जान फूंक डालेंगे. उनके लिए भी शॉट सिलेक्शन मायने रखता है. लूज गेंद और अच्छा प्रयास किया था सुनील ने, लेकिन उस शॉट को नहीं रोक पाए. लूज गेंद थी. सही अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहे शैलेश. शैलेश काफी भाग्यशाली है कि इनिंग्स की शुरुआत में कुछ लूज गेंदों की सौगात मिली है. मोमेंटम को प्राप्त करते हुए टीम राइडर्स काफी समय के बाद केपी को अब स्ट्राइक मिली है. केपी ने भी 25 रन बनाए हैं अपने 20 गेंदों में. ऐसा लग रहा था कि थोड़े से थके हुए हैं, लेकिन अब काफी समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बिताए हैं तो वो वापस से एनर्जी रिफ्यूल हुई होगी. गगनचुंबी शॉट. जगदीश बिसावा ने वो प्रयत्न किया वहां पर, लेकिन न सफल. और एक चौका निकलता हुआ केपी के बल्ले से. रिदम मोबाइल्स चौका. रिदम मोबाइल से चौकों की बौछार होती हुई. बिल्कुल राइडर्स ने वो फरमान जारी किया है कि तेज तर्रार तरीके से इस इनिंग्स को आगे बढ़ाना है, क्योंकि नेट रन रेट के पहलू पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा. वो नेट रन रेट वाला जो मसला है वो काफी निर्णायक हो सकता है. पॉजिटिवली खेलती हुई टीम राइडर्स. मैसेज भी लाउड एंड क्लियर है. बहत्तर रन बने उस 1 रन के साथ.
इस तरह से अगर खेलते हुए ड्रिंक्स इंटरवल में अगर पहुंचेंगे तो टीम राइडर्स के कैंप में अच्छा माहौल नजर आएगा. ओ मिस कर गए वहां पर. बहुत ही अच्छी गेंद थी राजीव की. थोड़ी एक्स्ट्रा टर्न हुई और गौरांग भी थोड़े से बीट हुए. 2 रनों की प्राप्ति हुई. अपने फिटनेस पे लगातार काम कर रहे केपी, लेकिन इज नॉट रीचिंग इज पीक ऑफ फिटनेस. वेलकम टू दीपेश मेहता. स्वागत है टीम ब्लास्टर्स के ओनर विकी भाई मेहता का. बारह गेंदों में 27 रनों की यह साझेदारी बन चुकी है केपी और शैलेश के माध्यम से. देखना है कि ड्रिंक्स इंटरवल के पहले के ओवर की जिम्मेवारी किसे देते हैं. शायद डीजे, पता नहीं, लग ऐसा रहा है कि डीजे गेंदबाजी करेंगे. अच्छी शुरुआत. 9 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन से 1 विकेट के नुकसान पर अजय प्रभु देसाई को रिटायर्ड किया था, वापस बुलाया था थिंक टैंक ने. हल्का सा हवा में खेला था. बहुत ही बढ़िया एफर्ट वहां पर, बहुत ही बढ़िया एफर्ट. थ्रो भी काफी अच्छा है आशीष का. बढ़िया फील्डिंग, क्या बात है. 2 रन बचा है. अच्छी एफर्ट. इसी ऊर्जा के साथ लगातार फील्डिंग पेश करनी होगी. That fumble from Manu will not cost the team any extra run. They are happy with a single. 3 balls left before the drinks interval. 78 for 1 it is. Shailesh on to 19 of 12. Putting the ball into that mid-on area. He's running out of fuel but is hanging on. He knows that the drinks trolley will soon come and he will be refueled. What a contribution from KP. That's a good cricket by Shailesh. Shailesh, that kind of cricket at the stroke of drinks, that is exactly what they want. The final ball coming up, 80 for 1. 9.5 overs. The 10th PCPL over. Both the batters negating the drinks interval safely. 81 for 1 at the end of 10 overs. KPS faced 25 balls.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो. Welcome back. That's well driven, getting right to the pitch of the delivery. It will be interesting to see how Kishore Pandey approaches the post-drinks interval session. The match is almost in the balance. No clear favourite at the drinks interval. Almost even Stevens the match. The 10 overs coming up should be quite exciting. Bisawa to Chadwa. Bouncing on that back of length delivery, that was the loose ball with the mobile's boundary. I think Team Ace Chargers have been so charitable to Shailesh Chadwa. He's been given a streak of loose deliveries and every time he's managed to put that loose delivery away for a boundary. KP has been given tidy balls, but Shailesh has been gifted loose deliveries, and just look at the way he's making them pay for those loose balls. They've got one extra man down there. Well done. They are just a little ahead, a fraction ahead in this situation, Team Riders. Just a fraction ahead. So Team Ace Chargers have to play like a team that is on a mission, and the mission is to wind up the innings for less than 140. Gaurang mentioned 120, but we do not want to be giving away more than 135. Well, the finger has gone up and Kip is on his way back to the pavilion. Jensen LED lights, Ganda Royal Refinery wicket, and in comes Sunil Raheja. The body language is quite positive because he's had a couple of good knocks and he's coming into this match with reasonable confidence. 27 balls, 33 runs, 4 boundaries in that knock from KP. 53 minutes is what is spent at the wicket, and that has taken the fuel away from him. He's working on his fitness, but yes, still not at the peak of his fitness. But that's a very good contribution, very good knock. That's Alok Somani. Alok Somani. I would give one of my arms away to have somebody like Alok Somani in my team. That good a player. 24 carat gold player Alok Somani. Gautam Parekh, Alok Somani, Srinath Pai, Karan Singh Walia. The showstoppers. The big night for Gaurang Karakasia, both as a captain and as a batsman as well.
One more name to be taken, Anand Sangai, in that elite list of the top 6 batters, Sam Kapadia. Straight away making his intent clear. If the ball is in his range, he's going to be going for that shot. That shot was almost flirting with danger. So much of risk involved in that first shot. Ashish has got a good arm and is a very good outfielder. Ashish always gives more than 100% in the field, and the field is like the cheerleader for Team Ace Charges. End of 11 overs, 90 for 2. Once again, the warmest welcome to our Governing Council member and Cricket Committee Chairman Kaushik Bhai Mehta. What a fantastic season underway. We will be playing at least till the mid-May or maybe even the end of May. All ball and no plate. Third over for Pragnesh. Oh, what a good delivery. What a good delivery. And the finger goes up. What a prized wicket. This is exactly what Team Ace Chargers wanted quite early on after the drinks interval. And what a master stroke by Gaurang Karakasya of persisting with Pragnesh. The big fish gone. Jensen LED lights. Gandhar Oil Refinery wicket. He was looking so dangerous. This could be a difference of at least 25-30 runs. At least 20 runs if I am not mistaken. In comes Sunil Raheja. A cameo of 27 runs of 17 balls. So Shailesh Chadwa continuing with the good form. And this is exactly what you want as one of the key players. You want to show to the world that I am still there. I am not going anywhere. I am still here at the GSC Senior Cricket. So well played, Shailesh. And that's a very good delivery by Pragnesh. Exactly what they wanted. This will instill that extra energy into the body language of Team Ace Chargers. They will be a more positive outfit from here on. Yes, Sunil Raheja is quite new to the wicket, but he needs to make sure that he stays around for some time. Ideally, till the end of the 20th over, he needs to stay put. He's all pumped up. He's bowling with his tail up now, Pragnesh.
वो संजीवनी मिली है शैलेश के उस विकेट के माध्यम से। लगी रहा था कि वो गेम निकल जाएगी। रिदम मोबाइल्स चौका, वो ट्रेडिशनल फ्लिक शॉट जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। बारह ओवर्स के बाद 98 रन बने 3 विकेट्स के नुकसान पर। आलोक सोमानी के बल्ले से वो निकला, आत्मविश्वास से भरा रिदम मोबाइल्स चौका। महत्वपूर्ण मैच है और उस लिहाज से वो कम से कम 12-14 रन से रोकना जरूरी है। एज अ फील्डिंग यूनिट यू वांट टू स्टॉप दोज 14-16 रन्स, ताकि वो कुशन मिले 14-16 रनों का। गौरव हालांकि बाहर है आउट साइडलाइंस पर, लेकिन पूरी तरह से मैच में इन्वॉल्व है गौरव यादव। हमेशा काफी अच्छी सपोर्ट कास्ट को लेकर उतरते हैं टीम एस चार्जर्स। काफी लोग एस चार्जर्स को फॉलो करते हैं। What a shot! Anybody who can play that kind of a shot, he has to be a class act. The best with the mobile's boundary added to the score and also 100 runs up on the board. What a shot from Alok Somani. किस शॉट को अंजाम दिया, बहुत ही बढ़िया, कॉपी बुक स्टाइल। अमित भी थोड़ा सा उस शॉट को सराहना करेंगे, उन्हें पता था कि गेंद इतनी खराब नहीं थी, वो रीच बहुत ही अच्छी है, मन लुभाने वाला शॉट। ये काबिलियत है आलोक की। तीसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। तीन रनों की बढ़ोतरी के साथ रन संख्या 106। अनिल दुग्गल द मैजिशियन का स्वागत है। Oh, what! Just look at the power in that shot. With the mobile's boundary, when Sunil Raheja hits the ball, it stays hit with the mobile's boundary. In spite of having lost the wicket of Shailesh, they are not losing the momentum. And that is exactly the game plan, not to lose the momentum. And that's a very good thought process. That's a good game plan. And the way they are executing the game plan, that's spot on. Growing in confidence, growing in stature. That's Sunil Raheja. Not only the net practice, also the personal coaching sessions. That is proving to be fruitful for Sunil.
End of an expensive over from Amit Desai. The score after 13 PCPL overs, 112 for the loss of 3 Jensen LED Lights Gandhar Oil Refinery wickets. Time to once again thank our title sponsor, that's Shri Praveen Kothari, a GC member, Lakshmi Leela Group, a venture by Praveen Kothari. Rhythm Mobiles, the boundary sponsor, Comfort Group, the sixer sponsor, PCPL, the over sponsor, Gandhar Oil Refinery, Jensen LED Lights, the wicket sponsor. The final over for Pragnesh. Oh, that odd bounce. DJ should have stopped it because he's quite agile. He's a fit man. They have put the foot on the pedal. Alok Somani is looking dangerous. What a player he is. Iconic player. Is definitely the batting all-rounder. He can bowl. Very good in the field. हमारे 45 प्लस लीग के ब्रांड एम्बेसडर सबसे यंग प्लेयर भार्गव व्यास का आगमन हुआ है. क्या बात है. फ्लैट 6, कंफर्ट ग्रुप 6, बड़े कंफर्टेबली उस कंफर्ट ग्रुप 6 को अंजाम दिया है आलोक सोमानी. जिस तरह से वो पहली गेंद का सामना किया, जिस तरह से वो सेंटर पिच पर पहुंचे, पूरी तरह से मन बना के आए थे कि आज एक शानदार इनिंग्स को अंजाम दूंगा, सकारात्मक तरीके से इनिंग्स को आगे बढ़ाऊंगा. आज की शाम का पहला छक्का. राजीव लॉन्ग ऑफ पर. थोड़ा सा ऑड बाउंस. एक 123 रन बने हैं. 14वां ओवर प्रगति पथ पर, एक गेंद बाकी है. इनसाइड आउट शॉट, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में से वो शॉट खेलना है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से. 14 पीसीपीएल ओवर्स के बाद 130 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर. राजीव की वापसी होती हुई, राजीव कि मेरे ख्याल में 3 ओवर्स शेष है और राजीव किस तरह से वो 3 ओवर्स में शिकंजा कसता है, ये महत्वपूर्ण होगा. राजीव के लिए 45 प्लस से लीग सम्मानजनक रहा है. Jagdish Bisawa has been made to go here and there. It will take a toll on him. Maybe he will be brought back for his bowling. The man in pink, baby pink, that's Timesh Charges.
Raksha is having a good time. He always does. इसी इनसाइड आउट शॉट की हम बात कर रहे थे. यही गेंद सुनील रहेजा को 2 मरतबा मिली. स्वागत किया चौके के साथ अपनी वापसी में राजीव गर्ग का. विद मोबाइल्स चौका 127 रन. 13 में 31 बनाया लोक सोमानी ने. 13 में 31 और वो 31 के 31 रन देखने लायक थे. एक भी स्लॉग शॉट नहीं. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स को खेलते हुए 13 गेंदों में 31 रन बटोरना लाजवाब बात है. अच्छी गेंद. राजीव की वापसी. अच्छी वापसी. मंजे हुए खिलाड़ी है राजीव. एक्सपीरियंस्ड है. थिंक टैंक का भी एक अहम हिस्सा है. बहुत ही शार्प माइंड है. Oh, Zabardast shot. He gets stuck into that one. Sunil Raheja, that has gone a long way. That's a massive comfort group 6. That's a monster hit. Humongous. Out of the ground she goes, sailing in the crowd. That's a 90-meter 6. 90-meter 6 from Sunil Raheja. He's turning a new leaf. He's looking much better. He's got a terrific stance. He's at peace with himself. Earlier in the tournament he was struggling, but now he's at peace with himself. If we had to leave it, maybe that would have been a wide delivery. That's a very good contribution Sunil Raheja is making as the captain and as the team owner. His stocks are on the rise. Team Riders needs the best version of Sunil Raheja and is getting there. I'll not say that is there, but is getting there. And what we are witnessing from Alok Somani tonight, that is vintage Alok Somani. The job is cut out for Rajiv. That's a wide one. 137, 3 wickets down. End of 15 overs. $73 is what team Ace Chargers have taken to accomplish their 15 overs. Send back. Well done, Raju Pawar sir. Well done. A few protocols have to be observed as to when the extra players will take the drinks inside. We are presenting a very organized cricket tournament and we all have to follow protocols.
Not every time anybody can go in. DG has been brought back. Gaurang Karakase will always take that extra time to set his field. He wants to be perfect with his field setting. He always takes some extra time. That is his nature. That's a very good thing, to make sure, because he lays a lot of emphasis on his fielding setting. That's one of his important aspects, the captaincy. Sunil. You have to wait and watch. One bounce into the fence. With the mobiles boundary, one more to Sunil Roheja. With that boundary, the score on to 142. Runs coming in thick and fast. Oh my word. Scorching shot. Scorching shot. Just a look at the way Sunil Roheja is going about things. With the mobiles boundary, the partnership is 53, unbeaten of only 24 balls. Terrific. Terrific onslaught by Alok Somani and Sunil Roheja. Almost both the batters matching each other shot for shot. Welcome to the corner of Team Riders, Mr. Vishal Todi. He will be happy with what the team has achieved so far. Just imagine कुलदीप सर ड्रिंक्स इंटरवल के पश्चात जो 34 गेम हुए उसमें 66 रन बनाए हैं ड्रिंक्स इंटरवल के पश्चात. शॉट अच्छा, फील्डिंग भी उतनी अच्छी. अमित देसाई मिडॉन पर. जबरदस्त टाइमिंग थी, हालांकि कैच था वहां पर, लेकिन इट वाज ट्रैवलिंग लाइक अ ट्रेसर बुलेट. 150 upon the board over that smashing with the mobiles boundary. Let's have a look at the balls played by both the batters. Alok Somani has played 17 balls and with the help of 1-6 and 4 boundaries is on to 35. And look at Sunil Roheja, 4 boundaries and 1-6 also for him, 13 ball 27. What a partnership. दोनों ही बल्लेबाज के बल्ले आग उगलते हुए. हल्ला बोल. सुनील रहेजा का बल्ला भी बहुत ही शानदार तरीके से आग उगलता हुआ. पहले 50 43 बॉल्स में आए, दूसरे 50 31 गेंदों में आए और तीसरा 50 22 गेंदों में. क्या मोमेंटम बिल्ड कर रही है टीम राइडर्स, क्या गेम प्लान बनाया है, शानदार तरीके से गेम प्लान को अंजाम भी देते हुए.
दूसरे रन के लिए निकल पड़े। एक 152 रन। गेंद अच्छी थी। राजीव गर्ग के लिए छोर बदले है। इन ऑर्बिट टेंट की तरफ से गेंदबाजी कर रहे। इस वक्त ये दोनों बल्लेबाज गेंदबाजों के जज्बातों के साथ खेलते हुए। बढ़िया शॉट, मिनिमम एफर्ट और नतीजा देख लीजिए कितना शानदार। रिदम मोबाइल से बाउंड्री। जब इस तरह से चौके मिल सकते तो फिर पावर लगाने की क्या जरूरत है। नजाकत से खेला, नतीजा बहुत ही शानदार। इस वक्त टीम एस चार्जर्स की रणनीति को काफी हानि पहुंचाते हुए ये दोनों बल्लेबाज मानव गेंदबाजों के जज्बातों से लगातार खेलते हुए। This wicket is in fact turning out to be a graveyard for the bowlers. Nothing in it, no assistance for the bowlers. Maybe in the second half the wicket will play even better. That's the good news for Gaurang and Ace Chargers. I really like the look of Sunil Roheja. Just look at the way he's matching Alok Somani shot for shot. This is exactly what the team wanted. In the last 3 matches, Alok Somani is looking at peace with himself. No cobwebs in his thinking. The thought process is clear. When you have those cobwebs of doubts in your psyche, that is the time when you start to falter. Score at the end of 17 overs, 162 for 3, ladies and gentlemen, boys and girls. Just a look at the massive figures on the scoreboard. The partnership is 69 of 33 balls. Mind blowing. The way both these batters are batting as if it's nobody else's business. Explosive. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आजमाइश होती हुई बिसावा की इनोबी 10 की तरफ से। हर लिहाज से अपना आक्रामक रंग पेश किया है आज की शाम सुनील रोहेजा ने, खुलकर खेलते हुए पहली गेंद से टॉप गियर का इस्तेमाल किया है। एक बड़ी उड़ान भरते हुए गत 3 मैचेस से और अपनी टीम के लिए बड़ा योगदान करते हुए सुनील रोहेजा। इसी तरह की योगदान की दरकार थी सुनील रोहेजा की तरफ से। और दोनों बल्लेबाज 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए। अच्छी गेंद बिसावा की, धीमी रफ्तार, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन से दिए स्लो टर्न।
जो भी करना चाहिए वो गौरांग कर रहा है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। इस तरह के कैचेस को लेने के लिए आपको हर रोज 40 ऐसे कैचेस लेने होंगे हर रोज, तब जाके ये कैचेस आपके हाथ में बैठेंगे। वो टॉप एज पर लगकर गेंद ऊपर जाती है तो वो हवा में लहराती है। हर कोशिश कर रहे बिसावा, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। हर किस्म की कोशिश नजर आती हुई इस चार्जर्स की तरफ से। केवल बात यह है कि दोनों बल्लेबाज अलग जोन में नजर आते हुए। ये तो कैच बन सकता था। ग्रीटिंग्स टू द कोनर ऑफ टीम चैलेंजर्स हेमंत मोहिते। स्वागत है पारस बुद्धदेव का। Only 6 runs from that over from बिसावा। ड्रिंक्स इंटरवल के पश्चात ये पहला ओवर है जिसमें कोई चौका नहीं जड़ा। अभी भी लगी हुई है और डटी हुई है टीम एस चार्जर्स। बड़ी टीम है और एक बहुत ही उम्दा कप्तान भी प्राप्त हुआ है गौरांग कराकासे के रूप में, तो हत्या तो कभी भी नहीं डालेगी। जो भी स्कोर टीम राइडर्स स्कोरबोर्ड पर खड़ा करेगा उस लक्ष्य को तय करने की जिम्मेवारी गौरांग कराकासे और उनके बल्लेबाजों की है। And whatever score they put up on the board, I think Team Ace Chargers will back themselves to go the distance. The convener of the event and the owner of Team Panther Kings, the debutants Prasad Kerkera, is monitoring the things out here. Kaushik Bhai in conversation with Pramod Kashyap, Amit Mehrotra, the key organizers. Putting the brakes on, putting the brakes on. They're looking determined. Ace Chargers. That's a smashing shot. That's a smashing shot and equally well fielded. Equally well fielded by Bisawa. दो रनों की प्राप्ति हुई। रन संख्या है 171 रन। कुल मिला के 9 गेंदबाजी बाकी है। ये 19वां ओवर है। 19वां ओवर। बहुत ही बढ़िया तगड़ा स्कोर रखा है बोर्ड पर। That's a boundary. Confirmation with the mobiles boundary. 173. ये फायदा है टेक्नोलॉजी का।
वाइड गेंद 174 रन 174. Welcome to Harshil Shah. स्लो टर्न, थोड़ा सा अजीब और गरीब तरीके से खेला है. देखना क्या वो गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंचेगी. पहुंच चुकी है. विद मोबाइल से चौका. आलोक सोमानी के लिए वो 50 रन से मुकम्मल हुए. क्या बात है. 27 गेंदों में वो अर्धशतक, 6 चौके और 1 छक्का. क्या पारी खेली है. 44 गेंदों में कुलदीप सर 86 रनों की ये साझेदारी. बहुत ही बढ़िया बैटिंग, बहुत ही बढ़िया. कल भी प्रशांत और मुनीर चांदनीवाला ने क्या शानदार पार्टनरशिप को अंजाम दिया था. ओपनिंग पार्टनरशिप. गगन चुम्बी शॉट और लिया से आज की शाम का सबसे दमदार कंफर्ट ग्रुप 6. कोई मौका ही नहीं. बहुत ही शानदार मॉन्स्टर हिट, ह्यूमंगस. कितनी मिनिमम एफर्ट लगाई. देखिए कितनी शानदार तरीके से गेंद की पिच तक पहुंचे. बिल्कुल संयम रखा, एकदम स्टिल हेड के साथ उस कंफर्ट ग्रुप 6 को अंजाम दिया. जबरदस्त. राजीव आज काफी महंगे साबित होते. शायद ये रणनीति बनाई थी टीम राइडर्स ने कि राजीव जैसे गेंदबाज को सेटल नहीं होने देंगे. थोड़े से रिस्क लिए राजीव का और वो सब रिस्क पे ऑफ हुए. 200 रन संख्या जबकि 19 ओवर से समाप्त हो चुकी. 185 रन. क्या वो 200 रन बन सकते हैं? बन सकते, क्यों नहीं. सुनील बुटोरिया की अजमाइश होती हुई आखिरी विकल्प के रूप में 20वां ओवर लेकर. यह आसान नहीं होगा सुनील को. 199 सबसे हाईएस्ट स्कोर अभी तक का. टीम चैलेंजर्स हिम्मत मोहिती की टीम की तरफ से वो 199 रन से देखने को मिले. 181 रन 185 रन बने हैं आखिरी 6 गेंदों को लेकर. सुनील रहीजा स्ट्राइक पर. सुनील रहीजा के डायनामिक्स देख लेते हैं. 20 गेंद में 37 रन बनाए हैं. हल्ला बोल. चार रन से मिलेंगे. वो गेंद अभी सवा से काफी दूर थी. स्वागत किया सुनील बुटोरिया का रिदम मोबाइल से चौके के साथ. 189, 5 balls left. Can they get to 200? Terrific batting. Worth watching. One would have traveled miles and miles to watch this kind of a partnership. थोड़ा सा रवैया अलग सुनील रहीजा का, लेकिन क्या इंपैक्ट क्रिएट किया सुनील रहीजा ने. क्या कॉम्प्लीमेंट किया है आलोक सोमानी को. चलिए, मिस किया और जो भी कुछ करना बाकी था वो कर दिखाया. गोबरंकर आकाशिया ने. जेंस एलडी लाइट्स गंदा रॉयल डिफाइनर विकेट. एक अच्छी इनिंग्स को खेलकर वापस आते हुए 4 गेंद आने बाकी है. रन संख्या 189. 189. इन कम्स बापू नरेंद्र जडेजा. और एक बड़ा नाम सुनील रहीजा. 22 गेंदों में 41 रन से 6 चौके और 1 छक्का. नाइन्टी 96 रनों की पार्टनरशिप वहां पर टूटी. 96 रनों की पार्टनरशिप.
केवल 47 गेंदों में, क्या बात है। GSC 45 प्लस T20 लीग का स्तर और शानदार होता हुआ, जिसे हम आगे बढ़ रहे इस टूर्नामेंट में स्तर उतना ही बेहतर नजर आता हुआ। एक ही रन से मेरे ख्याल से समाधान प्राप्त करेंगे। दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। तीन गेंद शेष है, 191 रन, 3 गेंद बाकी है। वेलकम टू विपुल कल्याणी। Carpet drive, DJ there. 2 balls left. Alok Somani gets the strike, 192. 192, the highest score in the tournament. That is to the credit of Team Challengers, 199. Oh, that brushed Narendra Jadeja. The final ball, he will be looking to complete the proceedings with a 6. If they hit a 6, they will be at par with the Team Challengers. 193. $194 runs to win the match. That's a Mount Everest to scale. अपनी सुनिश्चित 120 गेंदों में इस मैच को जिताने के लिए 194 रन से बनाने होंगे। क्या शानदार क्रिकेट खेला है टीम राइडर्स ने। टॉस को हारा, आमंत्रित किए गए बल्लेबाजी करने के लिए क्या रुख अपनाया, क्या रणनीति को अंजाम दिया, शानदार। Team S Chargers will have to present the best version of them as a team. As a team, I say. Thank you. Time for a break. Over to Promo Productions.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome back. Amit Desai and Sunil Buttori are taking center stage for ace charges. It's going to be Devesh Mehta to be opening the bowling from the in-orbit end with his left arm around the wicket bowling, slinging action. A man with super ability, that's Amit Desai at the wicket. Sunil Buttori, quite a positive player. Just looking for a good start. And if they get off to a good start in the first 4-5 overs, that will give the confidence to the whole camp to have a shot at the target. Lights, camera, action, showtime. Since the last season, Devesh has been putting the focus on only releasing the ball and not looking to generate any extra pace. A little bit of movement is what he relies on. What a shot! That's gone high up in the air, but not so good timing. Initially, we all thought that he had timed it well. That falls well short of Alok Somani in that long on position. The first runs on the board for Amit. Sunil takes strike for the first time in this match. Offering the full face of the bat, just putting bat to ball. That could have been driven away into the gap, but still early days, and he's just happy to put the ball into the extra cover area for a single. The bottom hand coming into play. The full-fledged bottom hand. Welcome to Jitu Mandot. I wonder if this is exactly what they want from Amit. He's such a good player. He's got a terrific range of shots. A 360-degree range of shots is what he possesses. They want Amit Desai to give a proper direction to this run chase. End of over number 1. Only 4 runs off that first PCPL over. They wish off to a business-like start, and it's going to be Kishore Pandey to share the new ball with him. Bowling from the in-orbit end, the man on strike, it's going to be Sunil Buttori. Match number 24 of the Lakshmi Leela Group, GSC 45 plus T20 League, Season 7. Kishore Pandey will be a confident man with that knock that he came up with. So he should have that confidence going for him into his bowling as well. And it's going to be Sunil to face him early days in this second half. Getting some good shape and late movement in that delivery.
The intent from KP is to bowl those full length deliveries. Is just looking to gauge the conditions out there. He's just looking for that late movement. Harshal Shah, Jitu Mandot, Parminder Bamra, Vipul Kalyani, Prasad Karkera, and just look at who's sitting besides Prasad, Paras Buddhadev. They all are having a look at the exciting second half in this match. Amit on strike. Clean bowled him. The head was in the air. The pressure got to Amit. The pressure of chasing a mountain, that got to him. The weight and the head falling away. In the bargain, Jensen LED lights, Gandhar Oil Refinery wicket. He will not be liking to watch the replay. That is not the Amit Desai that we know. He's a terrific player. Super ability he's got. Amit Desai has been in this situation so many times. Strange that approach from Amit. Narayan Sharma comes into bat. One more very capable player. He's gone a little cold this season. He will be raring to go. He will be looking to make a statement here. Anyways, that's a terrific start for Kishore Pandey. They're all pumped up, team riders as a team. The men in red and blue, they are the riders. The men in pink are the ace chargers. They have to be turbocharged, ace chargers. They got to be believing in themselves. The whole batting lineup has to click. The wicket of Amit Desai was a big blow. Now they got to get over it. They've got to focus on the job ahead. Play time. Will the ball go into the boundary ropes? It has enough wheels on it to just about reach the Rhythm Mobile's boundary fence. 9 for 1. Not a bad delivery. He's getting the shape, so he will be encouraged there. There is some movement in the air. The Sultan of Swing is getting some late movement. He's getting some good shape on the ball. What a delivery, what a delivery. This is the KPA at his very best as a bowler. He's making the new ball talk. Testing times for ace charges. Devesh continues with the second over from the in-orbit end. After 3 overs, there will be a switch in ends. 9 for 1 after 2. The finger goes up, playing all around it. That was straight into his pads. He's looking a little disappointed, but he's got to take that long walk back to the hut. One more man bites the dust. Jensen LED lights, Gandhar Oil Refinery wicket. The second wicket down. Both the opening batters cooling the heels in the pavilion now.
In the meantime, the warmest welcome to Rishi Kedia. Just the way he played all around it, he's taking that walk all around. Nitin Ganatra, the powerhouse. The captain coming in as a runner for him. The runs that he will be running for Nitin Ganatra, that will get the adrenaline flowing in the veins of Gaurang. Amit Desai disappointed with himself, succumbing to the pressure. He should have played his natural game, and if the risk had to be taken, then the risk would have been taken by Butoria. The approach from Amit Desai should have been the normal one. The routine approach should have been taken by Desai, because even if he plays his routine game, is good enough a player to get the scoreboard moving at a fair clip. Do not ever look at the total in the first 3-4 overs. It's not getting that required shape that will get the ball to come into the left-handed batsman. Not enough movement in the air. We've already picked up 2 wickets. 1 each to KP and Devesh. The cream of the top order is back in the pavilion. This is a disaster. This is a disaster for team Ace Chargers early on. In comes Chitrang Thakkar. Gaurang cannot get into action till the time the PCPL power play of 6 overs is done and dusted with. 13 for 3. Opening the floodgates, team riders quite early on. 2 wickets to Devesh and 1 wicket to KP. The new man in Chitrang. He comes well prepared always, Chitrang. Tough job. Test of character. Team Ace Chargers will have to exhibit titanium nerves to stay in the match.
Especially the rule that any batsman has to retire after having played 36 balls or the time he reaches the 60 run mark. That is what keeps things interesting. That's a tailor made rule in the 45 plus event. That's well driven. Time for Team Ace Chargers to embrace all the positivity that they can accumulate. Narayan Sharma. Score after 3 PCPL overs, 16 for the loss of 3 Jensen LED lights, Gandhar Oil Refinery wickets. KP to Chitrang. What happened out there? Vivek Nasaria will be wanting to delete that incident from YouTube. Nobody's going to be liking watching that replay. That's not a miss, that's a mess. Maybe just closed his eyes as the ball was coming into his bucket. KP is looking all business. Meaningful. What an outing he's having. What a good night for KP. Looking for that extra movement, wanting to bowl even more fuller. The biggest thank you to all the
viewers on YouTube on behalf of the cricket committee of the Goregaon Sports Club. Thanks for your patronage. Thanks for all the support that you've been generating and giving to the GSC cricket. Keep cheering us. Match number 24 underway. 47 matches to go in this tournament. It's going to be at least 1.5 months more. KP can do nothing wrong tonight. जो भी कुछ फिजियो की जरूरत पड़ेगी मैच के बाद, अच्छा जोश और जज्बे के साथ केपी आज अच्छा योगदान करते हुए सभी ने कोरस में अपील की और गेंदबाज ने ना कहा, अंपायर से ही ना कहा कि नहीं ओके ठीक है। ओवर की समाप्ति, एक दिलचस्प ओवर वहां पर समाप्त हुआ। 4 पीसीपीएल ओवर्स के बाद 17 रन से 3 जेनसन एलईडी लाइट्स गंदा रॉयल डिफाइनरी विकेट्स के नुकसान पर। थोड़ा अटेंशन लगेगा केपी को। हमारे फिजियोथेरेपी पार्टनर डॉक्टर वेदिका जुठानी, वी वेदा क्लिनिक। uh, 45 प्लस प्लेयर्स अगर आप रेगुलरली अगर वी वेदा क्लिनिक जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपकी करियर 3-4 साल और आगे बढ़ेगी। योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर योर रिकवरी एंड रिहैब। Vivek Nasaria will have to forget that drop catch. He needs to bowl a good spell. Welcome to Mrs. Raheja and Mrs. Nasaria. देवेश का स्पेल जारी। चित्रांग बनाम देवेश। Driving it downtown, the on drive, one of the most difficult shots to be playing, the on drive. The masters were VVS Lakshman and Rahul Dravid of the on drive. Looking to manufacture a shot which wasn't on the cards.
The situation demands some out of the box thinking by Ace Chargers. They have their back up against the wall. They're looking very relaxed as a team. They are in a good situation. They are taking a stranglehold on the match. They're having a firm grip on the match at the moment. What's the counter that Team Ace Chargers is going to be coming up with in this kind of a situation? They need to provide a counter. End of 5 PCPL overs, 21 for 3. Let's have a look at how many runs are required of how many balls. 90 balls and 173 runs to win the match. The required run rate is 11.53. One of the pillars of strength to the organizing committee under the leadership of Kaushik Bhai Mehta, that's the convener of the tournament, Prasad Karkera. Still a long way before they can relax as organizers. This is match number 24. So got to keep our fingers crossed. Kaushik Bhai has already announced multi-club inter-department tennis tournament, which is already the talk of the town in the GSC cricketing circles. That will be a big tennis cricket extravaganza. लूज गेंद थी, सही अंजाम तक पहुंचाने में सफल नहीं रहे नारायण शर्मा. बापू ने दौड़ लगाई है और बहुत ही जल्द हार मान ली बापू ने. विद द मोबाइल्स चौका. 5 साल पहले शायद उस गेंद को रोक लेते बापू. This is what happens when you are in a song. That's the key thing for an all-rounder. You can carry the confidence of a good contribution in one department. You can carry the confidence into your other department. The batting confidence is being carried into his bowling, and that is why he's looking so good tonight. Bapu for the second time. That should have been stopped. The earlier one was quite away from him. This should have been stopped by Bapu. With the mobile's boundary, he accepts the fact. He says sorry to KP. अगर ये 145-50 स्कोर होता तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ता. ये लग्जरी है, एक एक्स्ट्रा 30 रनों का कुशन मिला है आज की शाम.
6 पावर प्ले ओवर समाप्त हुए हैं. 1 to go, is it? 1 to go. One to go. अपनी गेम को और धार देनी है तो और फिटनेस और बनानी होगी. जो प्लेयर फिट है उसी की गेम में धार नजर आएगी. अगर वो राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट खेलना है, लंबे अरसे तक एक टूर्नामेंट खेलना है, तो फिर वो फिटनेस जरूरी है. केवल संडे टू संडे खेलना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, साधारण फिटनेस से भी काम बन पाएगा. लेकिन एक बड़े टूर्नामेंट में लगातार 8 मैचेस को खेलना, प्रैक्टिस करना, लगातार करीबन 4 दिन 7 में से प्रैक्टिस करना, तो फिर यू हैव टू बी फिट. Vaibhav Todi comes into the attack from the far end. Narayan Sharma. Narayan Sharma and Chitrang Thakur. अटेम्प्ट अच्छी की थी, प्रयास अच्छा था देवेश का. अगर लेते तो बिल्कुल एक चमत्कारिक कैच होता. 2 रनों की बढ़ोतरी, रन संख्या 32 पर. पावर प्ले के पश्चात का ये पहला पीसीपीएल ओवर यानी कि 7वां ओवर. गेंदबाजी करते हुए वैभव. लूज गेंद को सही अंजाम तक पहुंचाया रिदम मोबाइल्स बाउंड्री फेंस में. छत्तीस पे 3. बड़े इनिंग्स की फिराक में नारायण. एक्स्ट्रा कवर पर विवेक नसरिया.
बहुत ही ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी वो गेंद, खींचा वाइडिश मिडऑन की दिशा में। शैलेश छाड़वा मौजूद। अच्छी गेंद। वैभव की इस ओवर की समाप्ति। फिर की गेंदबाजी के जादूगर विवेक नसरिया की आजमाइश होती हुई। बहुत ही अनुकूल स्थिति में गेंदबाजी करने के लिए उतरे हैं। इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है, जबकि प्रेशर पूरी तरह से टीम एस चार्जर्स पर है और कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है टीम राइडर्स पर, लेकिन रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट गेम है, अनिश्चितताओं का खेल है। विनीत स्मार्ट स्टॉप। इनिशियली मिसजज किया था, अपने आप को सही वक्त पर सवारा, उसके बावजूद ओवरथ्रो का रन। Jitu Mandot is in a hot conversation with the coach Mayank. जो भी कुछ करना चाहिए अपनी गेम को फिर से एक बार तराशने के लिए वो करते हुए जीतू। अच्छी फील्डिंग, अच्छी एफर्ट। हेमल अपनी टीम का एक अच्छा आउटफील्डर है। टीम राइडर्स बाल बचे, कैसे बचे वो पता नहीं, लेकिन बचे। अच्छी गेंद थी विवेक नसरिया की। टीम राइडर्स की बात करें तो उनकी फील्डिंग गेंदबाजी और बल्लेबाजी से थोड़ी सी कमजोर है टीम राइडर्स के लिए। बल्लेबाजी बहुत ही पुख्ता है, गेंदबाजी भी अच्छी है, फील्डिंग पर थोड़ा काम करना होगा एज ए टीम राइडर्स ने। वॉरियर्स, चैलेंजर्स, सुपरस्टार्स, ब्लास्टर्स, ये चार टीम्स पॉइंट्स टेबल के पहली चार पोजीशंस पर है। नंबर 5 पर है राइडर्स।
8 ओवर्स की समाप्ति के बाद 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर रिक्वायर्ड रन रेट 12.33 12.33 इज द रिक्वायर्ड रन रेट. Have a feeling that at some point in time Alok Somani will be introduced. For the moment looks like it's going to be Bapu. Narendra Jadeja. Truly a very genuine all-rounder. नरेंद्र जडेजा को बैटिंग ऑलराउंडर कहे या बॉलिंग ऑलराउंडर, ये दुविधा है और उसी वजह से वो जेन्युइन ऑलराउंडर है. Running the team nicely, Sunil Raheja in the company of Vishal Todi and Jayesh Jogia. That goes down the leg side. Jadeja has to get into the groove as they move ahead into the tournament. Both Jadeja and Alok Somani, they have to find their bearings as bowlers. The pressure forced Chitrang to play a false shot. In the bargain he gets clean bowled. सफलता पहले ओवर में हाथ लगते हुए नरेंद्र जडेजा के. Jensen LED lights, Gandhar all refinery wicket. In comes the big man, Captain Cool, Gaurang Karakasia. Truly one of the gems that we have at the Goregaon Sports Club, the senior category, also the open category. Truly a gem. इस मैदान पर कई सालों से आशियाना बसाया है गौरांग कराकासिया ने. केवल 36 गेंद खेल सकते हैं और इन 36 गेंदों में इस मैच का रुख बदलना थोड़ा सा मुश्किल है. अगर वो 60 गेंद मिल जाती तो काबिलियत रखते गौरांग इस तरह के मैच को भी निपटने की, क्योंकि केवल 36 गेंद तो कोई और दो बल्लेबाजों ने वो भरपाई करनी होगी. नारायण शर्मा हो सकते वो बल्लेबाज. चार विकेट्स का पतन हुआ है टीम एस चार्जर्स के लिए. महत्वपूर्ण मैच टीम राइडर्स के लिए. न केवल जीत, एक बड़ी जीत की फिराक में, वो बड़ी जीत मिलती है तो वो नेट रन रेट थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, जो कि वक्त की जरूरत है. वक्त की नजाकत यही है राइडर्स के लिए कि वो नेट रन रेट ऊपर जाए. टफ कंपटीशन, ऊपर के 5 टीम्स में, बहुत ही टफ कंपटीशन में. जब गौरांग बल्लेबाजी करते तो हर वक्त ऐसा लगता है कि उनके पास एक्स्ट्रा समय है. आईसाइट अभी भी उतनी अच्छी है, रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, मैच टेम्परामेंट तो 100%.
मैच सिचुएशंस को भापने में मानो पीएचडी की रखी है गौरांग कराकासे जैसे प्लेयर्स ने. 50 रन से मुकम्मल हो चुके टीम एस चार्जर्स के लिए. 50 अप ऑन द बोर्ड. Nicely nudged away. Himal is in hot pursuit. He's really made a dash for it. End of a successful over from Bapu. Score after 9 PCPL overs, 53 for 4. The required run rate 12.82. The drinks trolley is ready. The way Ashish fielded for his Chargers, the same way Hemal is fielding for Team Riders. The approach and the attitude from Himal, the saving grace for Team Riders in the fielding department. He's got his helmet on and is up close as Vivek Nasaria starts to bowl. फिट प्लेयर है विवेक नसरिया. 5 साल से बस यही उनका बॉडी स्ट्रक्चर. नो चेंजेस एट ऑल. मजाकत से खेला, लेट खेला. चले ये चौका होगा. कोई मौका ही नहीं है कि उससे गेंद को फिर रोक पाए. विद द मोबाइल्स चौका. विवेक नसरिया क्योंकि हेल्थ क्लब के चेयरमैन है तो फिटनेस उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आना जरूरी है. अच्छे स्पिनर है, पैशनेट है क्रिकेट को गेम को लेकर. अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, टीम ओनर भी कितने सालों से बने रहे हैं. और एक विकेट का पतन. विवेक नसरिया के हाथों सफलता लगती हुई वो बहुत ही बड़ा विकेट है. बड़ी मछली जाल में फंसी है. ड्रिंक्स इंटरवल पर ये विकेट गिरना, ये इस मैच की दिशा मेरे ख्याल में अब हमेशा के लिए तय हो जाएगी. सुनिश्चित हो चुका होगा शायद ये नतीजा. इतना बड़ा विकेट है वो. जेम्स एलईडी लाइट से गंदा रॉयल डिफाइनर विकेट. विवेक नसरिया ने उस विकेट के साथ एक योगदान कर लिया है इस मैच में. टाइम फॉर अ ब्रेक.
sir? How many minutes they have taken? 44 or 43? 49 minutes is what they have taken. 49 minutes is what they have taken to bowl those 9.3 overs. That's a rare failure for Gaurang. The new man in Manu Sharma. Oh, what a delivery. That's a beauty. That's the beauty from Vivek Nasaria. That's as close as one can get to his best. That's a peach of a delivery. That's a beauty. Jensen LED lights, Gandharwal definer wicket is all pumped up. In comes Pragnesh at the fall of the wicket of Manu Sharma. Welcome to Mrs. Veena Sharma, the better half of Manu Sharma. She will agree with me that that was a bad shot from Manu Sharma. Things have not gone Ace Charges' way. At the moment, they are in a very dominant situation. The pressure getting to the batters. Manu Sharma is also somebody who's got a very good range of shots. वो आक्रामक खेलना उनकी फितरत ही है. अमित देसाई जिस तरह से आउट हुए वो अभी भी हम सभी को चोट पहुंचाई है. पता नहीं क्यों उन्होंने इस मैच में अपना रवैया बदला. सत्तावन पे 6. हुसैनास निकलते हुए विवेक नसरिया की तरफ से 10 ओवर से की समाप्ति के बाद 57 रन 6 विकेट्स के नुकसान पर, और इन 57 रनों में केवल 4 एक्स्ट्रास है. एक तरफ होगा हर्ष उल्लास, दूसरी तरफ थोड़ी सी मायूसी होगी. पूरी तरह से मैच में कब्जा जमा लिया है इस वक्त. रिक्वायर्ड रन रेट जबकि आधी टीम वापस जा चुकी है. 13.7 के रिक्वायर्ड रन रेट के साथ आगे बढ़ना होगा. बापू का स्पेल जारी रहेगा, हालांकि छोर बदले अब इंफिनिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे. देखिए, देखते ही देखते नारायण शर्मा ने 25 गेंदों में 30 रन से बना दिए हैं. बात हो रही थी लंच डिनर ब्रेक में और कहा था कि आई विल कम गुड. इट्स कम गुड, बट विल हैव टू वेट एंड वॉच वेदर ही कैन टेक हिज टीम क्लोज टू द विक्ट्री. One extra run, 58. अच्छा शॉट, टाइमिंग शानदार. फील्डिंग को लेकर टीम राइडर्स ने कुछ करना होगा. इस तरह की फील्डिंग से काम नहीं बन पाएगा आगे जाते हुए.
और हर मैच में तो वो 190 रन नहीं बनेंगे. 140 को किस तरह से डिफेंड करे, ये भी एक सोच होनी चाहिए कि एक आधे मैच में अगर थोड़े सस्ते में निपट गए तो उस छोटे से लक्ष्य को डिफेंड किस तरह से करे, ये देखना होगा. चेतावनी तो दे दी है मैंने. रिदम मोबाइल्स चौका 66 पे 6. The only saving grace has been Himal. The only saving grace. They are such a good batting team. अगर बैटिंग लाइनअप पर रुक करे राइडर्स का, it's almost as good as any of the other teams. Narendra Jadeja coming in at number 6 or 7. That is a testimony to the kind of batting lineup that team riders have. And Sunil Jadeja, the kind of form that he is in. You got to take care of all the three departments if you want to be the champion team or you want to get into the grand finale. You got to take care of all the dynamics. शैलेश चारवा भी बहुत अच्छे फील्डर है, लेकिन केवल एक ही गेंद शैलेश के पास गई है. आलोक सुमानी के पास भी बहुत कम गेंदें गई है. आलोक और एक शानदार फील्डर है. A little here and there, Bapu, in this over. Vishal Todi has been regularly owning teams the last 2-3 seasons. He's been a regular owner of a cricket team. Always ready to support the outdoor sports events. That's Vishal Todi. Vishal Todi's love for the game is second to nobody. Narendra has to tighten up his bowling. He might be one of the crucial factors in the bowling lineup for riders. So even Narendra Jadeja has to get his act right as a bowler. Multi-dimensional player. Definitely one of the marquee players. That's Bapu. Without Bapu's contribution, they got to 194. So that is the batting potential at the disposal of riders. Narayan Sharma has played 30 balls. So at last he's found his touch. That's the Narayan Sharma that we were always talking about. Exactly that kind of a Narayan Sharma. Although too many runs to be made, but he's showing some good spirit. On any other day, in any other kind of a situation, this would have been such a fine knock from Narayan. Good to see Narayan back among some good runs. He's on to 41 of 30. Being given company by Pragnesh.
74 for 6. He's getting turn and he's found his rhythm. And when he's in this kind of a rhythm, he is dangerous. The specialist off spinner. कहां से लेगा? अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं विवेक नसरिया. फ्लाइट करने से नहीं कतरा रहे. सिचुएशन ही उस तरह की है कि सभी वेरिएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं विवेक. Narayan Sharma has held fort at one end. ब्रेक में कहा था कि आई विल बी बैक. ब्रेक में ही नारायण ने कहा था मुझसे. क्या बात है. This is the Vivek Nasoria that team riders want. The finger goes up, he picks up the third wicket. He's a happy man. Jensen LED lights, Gundarwal refinery wicket. That was into the stumps and he closed the face of the bat a little too early. That was enough for Vivek to get the ball into the pads, picking up his third wicket. In comes Pratik. Pragnesh back. $77 for 7. The 777 on the board. Welcome to Ravi Narayan Sahu. The main league players, they can only play 5 matches, and Sunil Roheja with this match is played those 5 matches. Quite an important one this match. They had to win this one, and he played a good hand in this match. So quite the right call for Sunil Roheja to be playing this match. Tonight what we saw from Alok Somani, that was close to his best. I will not say it was his best, but yes, close to the best version of Alok. This is truly such a good version of Vivek Nasoria that is presenting. And when Vivek is in this kind of a form, he can be a big blessing for the team. This spell will give the confidence to Vivek Nasoria. This is exactly what he wanted. One terrific spell to be back. Narayan Sharma is back with that knock, although
Remains to be seen whether they can upset the juggernaut of Team Riders, which is looking very improbable at the moment. The required run rate 14.62. 48 balls and 117 runs to win the match. They need a miracle, nothing less than a miracle. Vaibhav Todi. 33 balls is what Narayan Sharma has faced. 33 balls. No chances piercing the two men in the deep immaculately with the mobiles boundary. He moves on to 47. 2 balls left. Can he get to the 50 run mark? His team is urging him to do so. जो हमेशा नारायण शर्मा के लिए हम कहते थे कि सक्षम प्लेयर है, काबिल प्लेयर है, इसी वजह से तो हम सभी यही बात दोहरा रहे थे. बढ़िया काबिलियत है नारायण शर्मा के पास. अगर 50 रन बनाने तो अपनी आखिरी गेंद पर चौका मारना होगा या तो फिर छक्का. अच्छी गेंद. नारायण शर्मा की इनिंग्स की समाप्ति होगी. जेनसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट, क्योंकि हम इस तरह के वाक्य को रिटायर्ड आउट दर्ज करते हैं. अच्छा नॉक नारायण शर्मा का, क्या बात है. बंदे में अभी भी दम है. प्रसाद भाई मिड इनिंग्स में कहा था कि आई विल फाइंड माई टच. गुड टू सी. वेल प्लेड. स्टक टू द जॉब. Standing tall amongst the ruins. Standing tall. In the meantime, the warmest of warm welcome to Karan Paji, who has been in spectacular form as a batsman. Great going for Karan Paji. Sam Kapadia, Karan Singh Walia, Srinath Pai, Ashish the new man in. Alok Somani. What a knock from Alok tonight. Superb knock. Then knock from Prashant Desai yesterday. Superb. Munir Chandniwala. Extraordinary performance this season. The writing is on the wall now. Team Ace Chargers is in the coffin corner. क्लीन बोल्ट. चलिए अब केवल और केवल औपचारिकता से हम गुजरते हुए 9 विकेट्स गिर चुके हैं. किसी भी वक्त ये मैच की समाप्ति हो सकती है. जगदीश बिसावा का आगमन होता हुआ क्रीज से दामन छूटा है प्रतीक का. इन 82 रनों में से 48 रन बनाए नारायण शर्मा ने, और पूरी टीम केवल 40 और रन बना सकी है. When Pratik is working hard on the game, he comes to the nets regularly. He is looking to contribute. Mountain to climb tonight. Mount Everest. That is what got to the psyche of the batting lineup of team
Ace charges. The final over in the spell for Vivek Nasaria has picked up 3 wickets. रमन खत्री काफी खुश है. रमन खत्री एक बड़ी जीत प्रतीक्षा करती हुई टीम राइडर्स की. They're closing in on a big victory. Closing in. They're closing the jaws. थोड़ी सी हिचकिचाहट विवेक नसर ने स्टंप्स के पीछे होना चाहिए था. हमेशा उनकी उंगलियों को चोट लगती है. वो इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा उंगलियों को, क्योंकि उनका पूरा आर्ट है वो पूरी उंगलियों पे है. जो भी कला है वो उंगलियों में है. चोटिल नहीं हो सकते हैं अब टूर्नामेंट के इस मोड पर. बिसावा औपचारिकता से हम गुजरते हुए मैच का नतीजा तो कुछ समय पहले ही सुनिश्चित हो चुका है. When will be the final nail in the coffin? He's picked up 3 wickets. 2 balls left in the spell for Vivek Nasaria. 2 balls left. He's blocking everything that is coming his way, Bisawa. Not easy to get out the tail enders. They can be a pain. जितना फ्रंट लाइन बॉलर होता है वो टेल एंडर्स को पिक करना मुश्किल होता है. Vivek Nasara will be happy with this spell. So many positives Sunil Raheja, Vishal Todi and Jayesh Jogi have collected on the way. This could be a massive win. It will be very interesting to see where the net run rate gets to for team riders. 2 points and the net run rate will go skyrocketing. Yes. Vaibhav Todi. टीम राइडर्स के जो रेगुलर ओपनर है निगम पटेल आज उपलब्ध नहीं थे और इस मैच को खेला सुनील रहेजा ने.
हेमल ने कैच छोड़ा. चलिए, इस तरह के कैचेस बैठ जाते हैं हाथ में, लेने की जरूरत नहीं होती है, छिटक जाते हैं इस तरह के कैचेस. 85. अंदाज अनोखा है जगदीश बिसावा का. इज गॉट इज ओन मेथड्स. अभिनंदन के पात्र बन चुके हैं राइडर्स. बहुत ही बड़ी जीत, बहुत ही बड़ी जीत. इस तरह की जीत के साथ मेरे ख्याल में ये पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ेगी. नेट रन रेट भी काफी पुख्ता होगा. हेलो. Hello. Requesting both the teams to please report into the presentation area. As the presentation party, we have with us the co-convener, the convener of the event, Prasad Karkera, and one of the key organizing committee members, Pramod Kashyap.
presentation ceremony. Congratulations to Team Riders for that massive victory. The net run rate will go skyrocketing, and those important 2 points that they wanted desperately. It's time for me to invite Gaurang Karakase to come up on stage. Can we give him a round of applause? Gaurang, a very tough day in office, and everything worked for Riders, nothing falling in place for Team Ace Chargers. From here on, it's going to be very difficult. Yes, 100% is going to be very difficult, but I think our boys are ready for the difficult one because one step we have taken a difficult one for today. I think rest all will easily take it. And first of all, my congratulations to Riders. Superb batting by Sunil Bhai, Alok Bhai, and not to forget, KP and Shailesh Sharma. Superb batting. They really they put such a wonderful score that we were like just looking here and there, like what to do about it. And yes, boys, to my team, every today's match is a good learning for us. And in terms of in bowling, fielding, let's improvise, let's introspect into ourselves and see how best we can do in the coming matches. Right? Thank you so much. So that's Gaurang. Well said. Introspection. That's the key word as they look to fight back. And now it's time for Sunil Raheja to step up. Round of applause for Sunil Raheja. His son is quite happy. Congratulations, a terrific victory, everything falling in place. So many positives you collect, all the options you're looking at, and the kind of form that you were in, your confidence, you're carrying that confidence into your captaincy as well. So well done. Thanks a lot for it, sir. No doubt about it that if you win, the smiles are more wider. That's really good. And first of all, I would like to say that the plan was absolutely settled. Like we asked our openers that you don't have to give wickets. No matter you get 40, 45. Special thanks to KP and Ajay Bhai. They didn't lose the wicket during that period. That was really good. After that, SC came in, and Alok Bhai, as usual, he is number one batsman, I should say. The way he plays, the way he was connecting, it was awesome. And the partnership between me and Alok Bhai was really good. We paced it really well, and we got to that great total. And we were absolutely thinking about that Gaurang Bhai and Sharma ji, that Manu Sharma ji, that they had to come, but we were lucky enough. And Vivek, he really bowled well, I should say. That the bowling what he did today, the way he bowled Manu Bhai, that was an excellent ball, I should say. Very well done. And a good team to Riders. All the best for the remaining of the tournament to you guys. Sorry for Ace Chargers. All the best to you guys for the remaining of the tournament, man. And good luck, guys. We have to take it one game at a time, and we have to make it to the top 4. Chalo. Well done, congratulations. A very good knock from Narayan Sharma as well. He's back. Great to see. Yes, it's time for me to invite the Man of the Match award. The honors are going to be done by the convener of the event. That's Prasad Karkera. Firki गेंदबाजी के जादूगर विवेक नसरिया. काफी अरसे के बाद इतना दमदार स्पेल, और मिसेस नसरिया की तरफ एक लुक, और वो बयां करते हैं कि कितने खुशी का माहौल है वहां पर. That was the spell that was waiting in the wings, and very well bowled by Vivek. Very well bowled. We call you the फिरकी गेंदबाजी का जादूगर. इसी तरह की गेंदबाजी वो किधर गत कुछ मैचेस से वो विवेक नसरिया खोया था, आज वो विवेक नसरिया वापस हम लोगों ने पाया है. क्या कहेंगे? It was my dream come true to be the man of the match against this team, and I got it, So any which ways, I would like to thank my team. My captain Sunil Raheja backed me all through the tournament, and I want to keep this winning momentum going throughout the tournament and win the team cup for the team. Very well bowled. Very well bowled. So yes, team Riders played as a cohesive unit. With this, if Prasad lets me do, we wind up the proceedings. Match number 24 has come to an end. Tomorrow 6:30 p.m. Sharp toss time. Good night. God bless. Take care. Drive back home safely.